Good morning, students. Today we are going to learn how to write a letter to the editor. So, basically, first comes what is a letter to the editor? Why should you write a letter to the editor? When should you write a letter to the editor? Should you use email to send it your letter? How do you write a letter to the editor? How do you get your letter accepted? So basically today we are all going to learn about कि कैसे लेटर लिखते हैं एडिटर को. देयर इज़ नथिंग टू राइट ऑन योर कॉपी और योर बुक. सिंपली आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है, देखना है, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम लेटर लिखें तो हमें पता हो कि क्या पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए. सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज़ अ लेटर टू द एडिटर. You feel strongly about an issue and you want to let people know what you think. You believe you can even influence people to make some action if you speak your mind. यानी कि अगर आप किसी इशू के बारे में बोलते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं. मे बी आपका जो स्ट्रीट है उसमें लोग जो है वो कचरा ज़्यादा फैला देते हैं और वो पड़ा रहता है. तो ये कोई इशू है जिसकी वजह से आप लेटर लिखना चाहते हैं एडिटर को. एडिटर यानी कि न्यूज़पेपर में आप लिखना चाहते हैं. सो फॉर दैट आपने कोई ऐसा इशू बताना है जिससे लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं. एंड letter is written way of talking to a newspaper, magazine or other regularly printed publication. Letters to the editor are generally found in the first section to the newspaper of the newspaper or towards the beginning of the magazine. Using a few carefully placed letters, you can generate plenty of community discussion. You can also keep an issue going by preventing it from disappearing from the public eye. You can stimulate the interest of the news media and create मोर कवरेज ऑफ फॉर द मैटर यू आर वर्किंग ऑन. यानी कोई भी इशू जो आपने उठाया है आप उसमें ऐसी पब्लिक आई या फिर पब्लिकेशन मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं ताकि वो रिकग्नाइज हो जाए. Why should you write a letter to the editor? Letters to the editor are among the most widely read features in any newspaper or magazine. They allow you to reach a large audience. You can probably think of many more specific reasons why you might want to write to the editor, but here are few general ones. यानी कि आप जो है वो ऑडियंस को अप्रोच करना चाहते हैं. आप कोई यानी कोई भी आप जो इशू लेकर आएँ आप चाहते हैं कि वो न्यूज़पेपर में फ़ीचर हो और आपकी ऑडियंस जिनको भी आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू उन्हें पहुंच जाए. तो कोई भी रीज़न हो सकता है. यू आर एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट अदर्स टू नो इट. यू थिंक दैट एन इशू इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू स्पीक आउट. पार्ट ऑफ योर ग्रुप स्ट्रेटजी इज़ टू परsuade अदर्स टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन. आप चाहते हैं कि कोई बड़ी अथॉरिटी किसी चीज़ पे एक्शन ले तो आप उसको मेंशन कर देते हैं. Or you want to suggest an idea or others, influence public opinion, educate the general public on a specific matter, influence policy makers or elected officials directly or indirectly, publicize the work of your group and attract volunteers on program participants. यानी कोई भी रीज़न हो सकता है और मोस्टली यही रीज़न होता है. When should you write a letter to the editor? Letters to the editor can be written anytime you want to shape public opinion, tell others how you feel about people, programs or ideas, or just inform the public on a certain issue. यानी कि अभी जो हम नेक्स्ट क्लास में लेटर लिखेंगे एडिटर को वो असल में जो इशू होगा वो भी एक मसला है जिसके ऊपर हम लिखेंगे. तो मेक श्योर टू कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड. They are a great way to increase awareness of the issue that you or your organization are working for, as well as to advocate for your cause. How should you send your letter? The reality for virtually every point publication is that they would prefer to get letters and other material by email. अब हर कोई ईमेल के थ्रू ही लेटर लेता है सिंस एवरीथिंग दे पब्लिश इज़ ऑन कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर के थ्रू होता है और फिर प्रिंट भी स्ट्रेट अवे फ़ौरन हो जाता है. अगर तो आप हैंड रिटन लेटर लिखते भी हैं तो उन्हें सबसे पहले तो कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा. तो बेहतर यही है कि आप ईमेल कर दें ताकि वो जल्दी से फॉरवर्ड करके प्रिंट आउट डायरेक्ट आ जाए. How do you write a letter to the editor? Open the letter with a simple salutations. Don't worry if you don't know the editor's name. A simple to the editor of the Daily Sun या फिर आप Dawn News कह सकते हैं. और just to the editor is sufficient.
इफ़ यू हैव द एडिटर्स नेम हाउएवर यू शुड, अगर तो एडिटर का नेम पता है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आपका पब्लिश हो जाए लेटर न्यूज़पेपर में. ग्रैब द रीडर्स अटेंशन. योर ओपनिंग सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड टेल रीडर्स व्हाट you are writing about and make them want to read more. Explanation what the letter is about at the start. Throughout your letter remember the rules. Be quick, be concise and then be quiet. यानी आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना अपना लेटर को. डोंट मेक द एडिटर और द जनरल पब्लिक वेट टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू से. यानी इतना आपने लंबा कर दिया हो कि वो एडिटर का इंटरेस्ट खो जाए और वो मज़ीद आगे जानने का ख्वाहिशमंद ना हो. टेल देम योर की पॉइंट्स एट द बिगनिंग. आप शुरू में ही अपने की पॉइंट्स बता दें ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं. एक्सप्लेन वाई द इशू इज़ इम्पॉर्टेंट. आपने एक्सप्लेन करना है इशू क्यों इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ टू राइट अ लेटर टू अ न्यूज़ पेपर और मैगजीन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर टॉपिक may seem clear to you. Remember thought that the general public probably doesn't share your background or the interest. Explain the issue and its importance simply and plain language and most people will understand. यानी जितना आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी उतना ही रिलेट कर सकता है people आपसे. Give evidence for any phrase and or criticism. State your opinion about what should be done. आपने अपना ओपिनियन भी देना है बाद में. पहले तो इशू आपने बताना है कि ये है और उसके बाद ओपिनियन भी देना है कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है. कीप इट ब्रीफ. आपने से ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, शॉर्ट लिखना है. शॉर्टर लेटर हैव अ बेटर चांस ऑफ बीइंग पब्लिश. सो गो बैक ओवर योर लेटर एंड सी इफ़ एनीथिंग कैन बी कट. और आपका कोई भी मतलब लेटर में फालतू कुछ है जो आप समझते हैं कि लंबा हो गया तो आप उसे काट देंगे. इफ़ यू हैव अ लॉट टू से एंड इट कान बी ईजली मेड शॉर्ट, यू मे वॉन्ट टू चेक विद द एडिटर. साइन द लेटर. आपने लेटर को साइन करना है ताकि पता चले, कंफर्म हो कि आपने ही लेटर लिखा है. चेक योर लेटर टू मेक श्योर इट्स क्लियर एंड टू द पॉइंट. अपना लेटर वापस से चेक करें कि हर चीज़ क्लियर हो और पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह हो. How do you get your letters accepted? How likely your letter is to be published depends to a certain extent on the publication you are sending it to. The New York Times probably receives hundreds. ज़ाहिर है अगर डॉन न्यूज़पेपर में भी आप अपना लेटर भेजते हैं तो उसको मतलब हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स रिसीव होते हैं, तो वो कैसे चूज़ करेगा. एंड जनरल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स विल पब्लिश लेटर्स दैट आर वेल रिटन, जो कि वेल रिटन लिखे हों एंड दैट आइदर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इशू, किसी भी इशू के बारे में हो. एंड दैट थॉटफुली एनालाइज कॉम्प्लेक्स इशू एंड इवेंट्स. कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हों जिसके बारे में अगर आपने लिखा है तो वो पब्लिश है, हो सकता है कि पब्लिश हो जाए. मोस्ट पब्लिकेशन स्टेज अवे फ्रॉम पब्लिशिंग रेंट्स although they may publish short and to the point letters that make the same points as a rent might. So these were few things that I wanted you to know about how to write a letter to a editor. अगर आपने एडिटर को लेटर लिखना है तो आपने कौन से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं. So students, inshallah in our next class we are going to write a letter on a issue जो कि definitely हम उसी वक्त देखेंगे. But till then make sure to understand these points very well so that can help you further.